नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में और आपके अपने YouTube चैनल मज़ेदार रीडिंग में। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 7th की ज्योग्राफी का रीडिंग। मैं पहले ही 2 चीज़ें आपको बता देता हूँ हर वीडियो में कि मैं ये चैप्टर आपको समझाता नहीं हूँ और ना ही मैं इसके नोट्स लिखवाता हूँ। मैं केवल आपको इस चैप्टर के रीडिंग करवाता हूँ, ठीक है। रीडिंग करके देता हूँ और आप लोग सुनते हैं ताकि आपके दिमाग में ये चैप्टर जो है फिक्स हो जाए। ये खासकर उन बच्चों के लिए है जिनको रीडिंग से थोड़ी दिक्कत है, ठीक है। रीडिंग से थोड़ी जिसको दिक्कत होती है उन बच्चों के लिए रामबाण इलाज है। और जो रीडिंग करते हैं, अगर उन्हें भी जल्दी जल्दी में रीडिंग करना है तो वो, मान लो उनको रीडिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा है या अभी थोड़े बिजी हैं, तो वो मेरे वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं और फास्ट स्पीड पे चला के देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी, क्लास 7th NCERT। After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed here. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grasses, marigolds, and butterflies is gone forever. He shared his feelings with his classmates in the assembly. The principal too sadly observed, "See how environment is changing." In the class, Ravi asked his teacher, "What is environment?" Whatever you see in your surrounding, whatever you see in your surroundings, said the teacher. Ravi thought aloud. That means the school building, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment. Yes, said the teacher. But wait, some objects are created by nature. For example, mountains, rivers, trees, animals, or others are made by people. For example, roads, cars, clothes, books. Now work in pairs. Make a list with your classmates sitting next to you if of the creations of nature and by human beings. ये सब एक्टिविटी आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं चाहे तो नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी बोलो, चाहे क्लास 6 के एनुअल एग्जाम्स बोलो, या कोई भी यूनिट टेस्ट बोलो। एनवायरनमेंट इज़ आवर, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat, and the land where we live. How do human beings modify this natural environment? The car fumes pollute the air. The water is collected in a pot. Food is served in vessels, and land is used to build factories. Human beings make cars, mills, factories, and manufacture containers. This is how human beings modify natural environment. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या है। नेचुरल में जैसे एयर है जो कि एटमॉस्फेयर को फॉर्म करता है, वाटर हाइड्रोस्फीयर को फॉर्म करता है, लैंड लिथोस्फीयर को फॉर्म करता है, एंड लिविंग थिंग्स बायोस्फीयर को फॉर्म करती हैं। ह्यूमन मेड बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मोन्यूमेंट्स, और ह्यूमन इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजियन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सब है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कुछ छूटा था क्या? अच्छा, रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा were all excited about making the list. Why is our environment changing? Asked the Iqbal. It's all because of our needs. They are increasing day by day. We are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings, the teacher replied. From the above conversation, you understand that the place, people, things, and nature that surround any living organism is called environment. The place, people, things, and nature that surround any living organism is called environment. It is a combination of natural and human made phenomena. While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on earth, human environment reveals the activities, creations, and interactions among human beings. Biotic देखते हैं, the world of living organisms, example plants and animals. Abiotic, the world of non-living
elements. Example land. Word origin environment. French word environner. Environner meaning neighborhood. Natural environment. Land, water, air, plants, and animals comprise the natural environment. You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and biosphere from your previous classes. Let us learn some more facts about these domains. Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. Landforms are found over the continents and also on the ocean floors. Lithosphere is the domain that provides us forests, grasslands for grazing, land for agriculture, and human settlements. It is also a source of mineral wealth. Let's do. यहाँ देखते हैं क्या बोला है, क्या करने बोल रहा है. Look at your surroundings. Make a list of uses that the land in your neighborhood is being put to. फिर से let's do. Where does the water you use in your home and school come from? Make a list of different uses of water in our daily life. Have you seen anyone wasting water? How? ये देखो, ये बायोस्फीयर है जहाँ पे एटमॉस्फेयर भी आता है, हाइड्रोस्फीयर भी आता है और लिथोस्फीयर भी आता है. तो आप लोग देख सकते हैं, लिथोस्फीयर मतलब लैंड वाला, हाइड्रोस्फीयर पानी वाला, एटमॉस्फेयर आसमान वाला, एयर वाला. Domains of the environment. The domain of water is referred to as hydrosphere. It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. It is essential for all living organisms. The atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. It protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. It consists of a number of gases, dust, and water vapor. The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. Plant and animal kingdom together make biosphere or the living world. It is a narrow zone of the earth where land, water, and air interact with each other to support life. यहाँ देखते हैं, लेट्स डू. और एक बार क्या बोला है. ऑब्जर्व द स्काई वाइल कमिंग टू स्कूल. मेक अ नोट वेदर द डे इज क्लाउडी, सनी, फॉगी और रेनी एटसेट्रा. देखो यार, ये सब करने का मन है करो, नहीं करने का मन है कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है. ग्लॉसरी. Ecosystem. It is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. What is ecosystem? At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jesse exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations." Hira from Jaisalmer explained, "We get no rains. We see only kikar and sand as far as the eyes can see. But you also find camels," said Ravi. यहाँ देख सकते हैं, ये वाला है a pond ecosystem. Hira says, "Not just camels. If you visit our desert, you will see snakes, lizards, and many insects too." Ravi wondered, why do the animals, the vegetation, and the way people live vary from place to place? Are they related to each other? Oh yes, very much so, the teacher replied. All plants and animals and human beings depend on their immediate surroundings. Often, they are also interdependent on each other. This relation between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem. There could be an ecosystem of large rainforests, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean, and even a small pond. Do you know, on 5th June every year the World Environment Day is celebrated. देखो ये काम की चीज़ है भाई साहब, ये देख लेना. 5th जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है. Barter system. It is a trade in which goods are exchanged without the use of money. ये सब important है. Okay, यहाँ देखते हैं. Do you think the park in which Ravi and his friends played formed an ecosystem? हाँ, form तो किया था. Human environment. Human beings interact with the environment and modify it according to their need.
Early humans adapted themselves to the natural surroundings. They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. With the time, with time needs grew and became more varied. Humans learned new ways to use and change environment. They learned to grow crops, domesticate animals, and lead a settled life. The wheel was invented, surplus food was produced, barter system emerged, trade started, and commerce developed. Industrial revolution enabled large scale production. Transport became faster. Information revolution made communication easier and speedy across the world. Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? A perfect balance is necessary between the natural and human environment. Humans must learn to live and use their environment in a harmonious way. यहाँ क्या दे रखा है? Talk to some elderly person in your neighborhood and collect information about the trees in his or her neighborhood when he or she was your age. The indoor games he or she played, his or her favorite fruit at your age. How did they make themselves comfortable during hot summers and cold winters? Display your answers on a wall और बुलेटिन बोर्ड. तो ये सब आप लोग एक्टिविटी ये कर सकते हैं. जो 6 के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वो ये सब ना करें. नूरी, a girl from Mizoram, from Ravi's class, often talks about the lush green surroundings of her place. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Noori invited him to visit her home state during the coming vacation. Ravi's teacher asked the students to draw the landscape, houses, and activities of the people and places they visit during the holidays. इसी के साथ दोस्तों हमारा जो चैप्टर है ये ख़त्म हो जाता है. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग अंत तक बने रहें. इसी के साथ आप लोग ये रीडिंग कर चुके हैं. कितना मिनट लगा दोस्तों बताइए? 12 मिनट के अंदर आपका एक रीडिंग खत्म हो गया. इसी प्रकार आप सोचिए, ये तो नॉर्मल स्पीड पे. अगर आपको जल्दी जल्दी देखना है तो आप इसको 1.5 के स्पीड पे देखेंगे तो इसको और ये और भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा. तो सोचिए दोस्तों, आप लोग बस एक वीडियो क्लिक करके आप एनसीईआरटी की रीडिंग कर सकते हैं. इससे बढ़िया चीज़ आपके लिए क्या हो सकता है? एनसीईआरटी की रीडिंग करना मतलब आप क्या बोलते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आने वाला है उसको एकदम पूरा बढ़िया से जान लिए हो. ठीक है, समझ गए? और इसके अलावा आप जहाँ से नोट्स बनाते हो, चाहे वो दूसरा यूट्यूब चैनल है, चाहे वो कोई गाइड बुक है, चाहे वो ट्यूशन टीचर है, चाहे वो स्कूल टीचर है, कहीं से भी बनाइए नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन एनसीईआरटी पढ़िए दोस्तों. एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम एकदम क्लियर रहोगे हर चीज़ के बारे में, क्योंकि एनसीईआरटी गलत नहीं बोलता है. ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह रीडिंग करते जाओ और मेरे साथ बने रहो. इसी प्रकार बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. बाय बाय.